Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing you the solution of our challenge certification replay arcade skill batch starter pack second lab that is build and optimize data warehouses with BigQuery, that is a challenge lab. Okay, so before starting the solution, I want to inform you that I already uploaded the solution of the previous lab that you can check out the solution with the help of the I button on the top right corner. आपको सारे labs का solution एक playlist में मिल जाएगा, तो make sure आप सारी lab complete कर लें. Without wasting time, start this lab and wait for the page to be loaded up. Now you can see there are total 6 tasks that we need to perform, but we have a very special easy method that will help you to perform this lab very easily. Simply click on the start lab button, wait for the credentials to be loaded up. Simply right click on open Google Cloud Console and open it in private window or in incognito mode. Okay, otherwise you will face certain issues. Okay, and click on the next button. Email ID will be automatically pasted up. Simply we need the password, so password is this one. Copy the password, come back here, paste the password, click on the next button and wait for this command to be run. Click on the I understand button, which is a simple welcome message. Accept it. Now we get logged in into our Google Cloud Console. So these are the similar steps that we need to perform in each and every lab to logged in. हर एक लैब में परफॉर्म करते हैं तो आप इसके साथ फैमिलियर होंगे. अब पॉपअप विल अराइज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस. सिंपली एक्सेप्ट इट. Click on agree and continue button. Now first of all, search for the BigQuery in the search bar. Search for the BigQuery and open it. Once the page get loaded, simply click on the done button. Now, first of all, we need to create a data set. Simply click on this three dot icon. Click on the create data set button. We need the dataset ID. So dataset ID is given to us. That is this one, dataset name. So copy this COVID 761. Come back to here, paste it here. Click on the create dataset button. Now you can see our datasets get created. Now comes the spatial part, and that is a spatial code. And you can see the commands that is used in this whole lab is collected and pasted in a notepad file. And this amazing task is done by the Qwiklabs channel on the YouTube. उन्होंने इससे रिगार्डिंग इस मेथड के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है. तो ये पूरी ट्रिक उनकी है, तो इसका क्रेडिट उनको जाता है. स्पेशल थैंक्स टू हिम. आप उनका यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. नाउ दिस नोटपैड फाइल विल बी गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसको कॉपी कर लें और नोटपैड में पेस्ट कर लें. आपको पूरी फाइल मिल जाएगी. डाउनलोड करके कॉपी पेस्ट कर लेंगे नोटपैड में. उसके बाद आपको क्या करना है, वी नीड टू मेक सर्टेन चेंजेस इन दिस फाइल. सो कम बैक टू द लैब and first of all copy the dataset name and come back to the notepad file. First of all, we need to remove this dataset name. Remove this, remove it and paste the dataset name. Make sure आपका full stop वहाँ पर रहे. Now we need to remove this table name. Remove this whole, remove it. We need the table name. So table name was also given to us. Table name is this one. So copy the table name and come back to here and paste it here. Now copy this whole, the table name and the data name. कॉपी इट वेरी केयरफुली. कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई एक्स्ट्रा अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए. ध्यान से आप कॉपी करेंगे इसे. वी नीड टू रिमूव एवरी टेबल नेम एंड डाटा सेट नेम एंड पेस्ट इट दैट in that place. You can see in the alert table, after the alert table you will see this. So remove it, paste it here. Now scroll down, keep scrolling and search for the data set name and the table together. जहाँ ये दोनों एक साथ लिखे हो वहाँ पर इसको रिमूव करेंगे और पेस्ट कर देंगे. मेक श्योर आपकी कोड्स जो है ये रहे ऐसे ही कैसे. स्क्रॉल डाउन, लुक फॉर अनदर डाटा सेट नेम एंड टेबल नेम, रिमूव इट एंड पेस्ट इट हियर. अभी मैं डाटा सेट नेम जो ओनली है, जहाँ पर सिर्फ डाटा सेट नेम लिखा है वो रिमूव नहीं कर रहा हूँ. सिंपली रिमूव द डाटा सेट नेम एंड टेबल नेम टुगेदर. स्क्रॉल डाउन, remove this and paste the name that we copied, paste it here. Scroll down, look for another data set name and table name together. You can see here it is. Remove it and paste the name and remove this last line also, this one, and paste it here. Now we need to copy the dataset name, single dataset name. So come back to the lab, copy this dataset name, and we need to remove the dataset name. So what we need to do, simply search for the dataset name. For that, simply press Ctrl plus F on your keyboard and paste the is whatever I am typing. Type that, simply type that dataset name like this and hit enter button. Let me check if I make the mistake. Okay, just let it be as it is. You can cut it. Simply search for the dataset manually. आपको dataset manually search करना होगा. You can see here it is, dataset name. Remove it. Now scroll down. Wherever you see the dataset name, type in. Remove that and paste the name. Whatever the dataset name.
आपको ये ध्यान से करना है, आपको बस यही काम करना है इसमें। ओके, स्क्रॉल डाउन। आप इसमें काफ़ी चीज़ों से बच जा रहे हैं, आपको हो सकता है लगे कि क्या कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ ईजी मेथड। ओके, नाउ वंस अगेन लुक फॉर द डाटा सेट नेम। अगर कोई डाटा सेट नाम लिखा हो तो उसको रिमूव करके हम ओरिजिनल डाटा सेट नेम पेस्ट करेंगे। मेक श्योर आप एक बार क्रॉस थ्रू कर लें, अगर कोई भी एरर आए तो मुश्किल होगी। वंस यू डन विद दैट, सिंपली नाउ टाइप कंट्रोल प्लस एफ दबाएंगे, टाइप डाटा सेट एंड हिट एंटर बटन, and it will show you whatever wherever the data set is written, it will show you. Okay, and in that way you will be clear about that there is no data set remaining. ये डाटा सेट रिमूव नहीं करना है, आपको पता है कैसे डाटा सेट नेम रिमूव करना था। तो अब हम हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, सिंपली कम बैक टू द टर्मिनल, click on this plus icon. We need to run the query one by one, so come back to the notepad, copy this first query, copy this whole one, copy this query। आपको क्रिएट से लेके यूएसए तक कॉपी करनी है, पेस्ट इट हियर एंड मेक श्योर यहाँ पर ग्रीन टिक मिल जाए आपको टॉप राइट कॉर्नर में। अगर ग्रीन टिक आ जाता है मतलब आपकी क्वेरी करेक्ट है। क्लिक ऑन द रन बटन, while it's running simply click on the plus button and create a new query। So copy the next query from the notepad, that is this one from the run the below query। हमें यहाँ से कॉपी करना है till here, copy it carefully। now come back to here, paste it here and make sure आपको green tick मिल जाए यहाँ पर and click on the run button, click on the plus icon and run the next query। Scroll down and BigQuery console, first query, that is this one, from create to code, copy it, come back to the terminal, paste it here, click on the run button and wait for this query to run। till then click on the plus icon, हम next query run कराएंगे। so come back to the notepad file, copy this from the update to the code, copy it, paste it here, click on the run button, come back to the here, scroll down, copy the task fourth query and that is from populate BigQuery console query editor। ओके, फ्रॉम अपडेट टू नेम, आपको ये फोर्थ टास्क में अपडेट से नेम तक कॉपी करना है। क्लिक ऑन द प्लस आइकन फॉर क्रिएटिंग अ न्यू क्वेरी, पेस्ट इट हियर, क्लिक ऑन द रन बटन, wait for this query to be run। till then click on the plus icon to compose the new query, come back to the notepad, scroll down, copy this first code from the update to the last one from here। okay, now come back to the terminal, paste it here, click on the run button, now click on the plus icon to compose the next query, come back to here, scroll down, now this will be the last query। तो आपको यहाँ से select से copy करना है ASC तक, copy it carefully, come back to here, paste it here and run this। Once it get completed, we will click on the check my progress for each and every task in the lab। you can see query is completed। make sure हर एक query के लिए आपको ऐसा green tick मिल जाए query is completed का। so come back to here, check each and every query जो भी हमने compose की थी, you will see a green tick, go through each and every query and make sure आपको green tick हर एक में मिल गया हो। हम एक एक करके हर एक query में जाएंगे। you can see we get the green tick in each and every query। once you're done with that, come back to the lab, scroll down and wherever you see the check my progress button, simply click on that and get the green tick। you can see you will get the green tick here, make sure you will getting a green tick। you can see assessment is completed। now scroll down, click on the check my progress, you will get a green tick here also। scroll down, click on this, you will get the green tick। you scroll down, click on this, you will get a green tick here also, wait for it, click on this check my progress also, you will get the green tick, assessment is completed। click on this, मेक श्योर आप हर एक चेक माई प्रोग्रेस पे ग्रीन टिक ले लें, उसके बाद ही हम एंड लैप करेंगे। ना स्क्रॉल डाउन, वेट फॉर दिस टू गेट अ ग्रीन टिक, now scroll down, keep scrolling, you can see congratulations, our lab is now completed। click on the end lab button, click on the submit button, give the star rating that you want to give, click on the submit button, click on the back icon to come back to the main page, wait for the page to be loaded up, scroll down, keep scrolling, open it and you will see a green tick beside our lab, it means we successfully completed our lab। okay, so that's the solution of this lab। if you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button। if you have any query, you can ask me in the comment box or on the telegram group। okay, so that's it for this video, thank you very much, good।